अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ओल्डेस्ट टेम्पल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ केदारनाथ इज हाइडिंग द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Hey guys, somebody tried to destroy this ancient temple. As you can see, this ancient statue is lying on the floor. This is the statue of Kali, a fierce goddess, and on November 2020, it is said that locals heard strange noises during nighttime, and when the authorities came in the morning, they found out that the statue was in this position. They have tried to dismiss it as a mere accident. Police say that nothing was stolen. So why did someone come to a very remote village in India and break the statue? They have claimed that it fell naturally, but that's impossible because stone statues don't naturally fall by themselves. And two, people have tried to destroy this temple for more than 900 years. As soon as I entered the temple, I noticed something very odd. All the carvings in the front have been deliberately removed. They have methodically destroyed and completely defaced these carvings. Why? Let's go inside one of the shrines. Here you can see a fantastic stone structure. It looks amazing. But the lingam, the main cylinder that was supposed to be in the middle, is gone. It has been carefully removed. Why? Who would do such a thing? Even on the ceilings, the destroyers have carefully planned and disfigured the carvings. It's done with such attention that we cannot recognize the original carving, so we are not able to decode the ancient information. But let's investigate why people have repeatedly tried to destroy this temple. This is one of the entrances to the main chamber. On top, the rectangle which had a carving has been completely defaced. And at the bottom, you can see this figure, which is also hacked. We cannot see the details clearly. And on the other side, this carving is also completely destroyed. And then these 4 stone blocks as well, they are completely defaced. Some experts have claimed that Islamic invaders destroyed this temple because they don't believe in idol worship and are not allowed to see images. But this cannot be true because on both sides you can see 2 guardians. They are completely untouched. If these carvings were destroyed by Muslim kings, why would they leave these 2 carvings? Whoever destroyed and is still destroying these carvings are doing it because they don't like the information in these carvings. And the carvings in this temple are hiding some insane details. For example, what do you see? Your natural instinct is to look in the middle where people have destroyed a beautiful lingam. But no, see here. At first sight, you think this man is pulling a rope. But no, that's his intestines. He has cut open his belly with a sword and is removing his own intestines, which looks like a twisted rope. His face is deliberately disfigured to make sure we cannot identify him. Right next to him, you can see a woman. I'm not exactly sure what they are trying to show here, but her legs are tied using a snake, symbolizing a venomous virgin or Vishakanya. In case you don't believe my theory that this guy was cutting up his own stomach, it's okay because I also did not believe that in the beginning. Look at the other side. This giant figure is cutting off his own head with a sword.
His hair looks quite fancy, and he's holding his hair firmly with one hand while decapitating himself. There are three very strange details here. In spite of killing himself, he's also in the process of killing someone else because he's standing on the face of this man. The victim is not dead yet because you can see his hands in the Namaste pose, begging for mercy. On the other side, you can see a mysterious figure, fully clothed from top to bottom, calmly looking away. The third detail is the most important. You can see a coin here. This means locals are still worshipping this figure. I'm not able to identify this figure, but if I talk to the locals, I could find more information and unravel the story. Why are these two self-destructive figures posted as guardians of this lingam? Who destroyed their faces and who removed the cylinder out of its base? On top, you can see another strange figure called Vetala. Its hair looks like spaghetti, and it has fangs coming out of its mouth like a vampire. It is said that if you see his face without blinking for 5 seconds and don't apologize for staring at him, he will give you nightmares tonight. What about this one? Here's a figure that's headless and is holding his head with his own hand as though he's giving it to someone else, like a trophy. The head is actually held upside down and the figure is holding it with a bun of hair. On the other side is a similar figure doing the same. In between these two figures, you can see two giant footprints. But I just feel bad for this guy. This is a weird situation for him. If you notice the outer walls, you'll feel very strange because most ancient Hindu temples are full of carvings. But these walls are almost completely blank and have no carvings. Maybe the original carvings were destroyed and then the rocks were polished to give an appearance that it had always been blank. But there's one carving left. Let's take a look at that. Her face is completely destroyed. Why? Okay, let's back up and do a simple head count. 1, 2, 3. On the bottom, you can see this guy lying down without a head, and there's also an animal. Is it a dog waiting to eat the remnants or something? Inside the deep dark chambers, there are lots of strange carvings. Almost all of them bring out a sense of awe and fear. There are many hidden carvings in this pitch black inner chambers. This is how the original Kali statue looked. It had fangs and it was guarded by these skeletal figures carved around here. Now the Kali statue has been restored and looks similar to this. If you visit this temple, the atmosphere invokes a strange feeling inside you even today. Something is very different about the design of this temple. There are 4 different chambers housing 4 different gods in the same place. Not only are the deities unique, this temple's architecture is completely different. 9 towers of different sizes put together, apparently with no rhyme or reason. Archaeologists admit that this temple was not designed based on any pre-existing temple in this region. They say this is the very first Hoysala temple. Now, what is Hoysala? Hoysala denotes an ancient empire that ruled this region from 10th to 14th century, and Hoysala architecture showcases a unique feature in its temples: lathe-turned pillars. Archaeologists confirm that this temple is the origin of lathe-turned pillars. What you see here are the very first
pillars created with lathe technology. Remember the first time I posted about ancient lathe technology in India? It became viral. And since then, some people have argued that, look, India was a very rich country. They had great kings and they had a huge workforce, lots of horses and elephants, slaves and soldiers. So, with an enormous amount of hard labor, they could have managed this lathe technology without advanced machines. But archaeologists found inscriptions confirming that this very first temple was not built by a king at all. It was built by a merchant, a businessman, by the name of Kulahana Rahuta. So how did a regular guy who did not have access to logistics and huge labor force make the very first lathe pillars? This is why some archaeologists are calling this temple pre-Hoysala, meaning they don't think Hoysala kingdom had anything to do with it. They think the Hoysala kings were so impressed with this temple that they borrowed some aspects like lathe pillars, maybe even the logo, but left out all the scary and self-destructive carvings. In a way, they are right in calling it pre-Hoysala because other Hoysala temples get thousands of visitors every day. But people say this temple gets less than 10 visitors every month because today most visitors are Hindus coming to worship gods and others are usually tourists trying to admire the beautiful carvings. This temple does not have any of that. People expect to see beautiful gods. They just don't understand what is shown here. If people do visit this temple, they usually leave with a sense of blank expression. So why was the Kali statue destroyed recently? Who systematically destroyed these carvings? What was the idea behind constructing this ancient temple? Why were these strange carvings put here? Please let me know your thoughts in the comment section. I am Praveen Mohan. Thanks a lot for watching. Don't forget to subscribe and I'll talk to you soon. Bye. जी जनाब। अच्छा, बहुत ही रहस्यमय, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। अच्छा, मैंने अक्सर चीज़ें देखी हैं टेम्पल्स के हवाले से कि टेम्पल कोई भी हो उसमें कुछ ना कुछ सीक्रेट्स, कुछ ना कुछ राज आज भी छुपे हुए हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ में आई इस टेम्पल की। हम बहुत सारे टेम्पल्स देखते हैं, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स भी हमने देखे, बहुत पुराने प्राचीन टेम्पल्स देखे। इस टेम्पल के अंदर मैंने देखा है ज़्यादातर मूर्तियों को बर्बाद कर दिया गया, उनके सरों को धड़ से अलग कर दिया गया है और कई मूर्तियों के फेसेस को गायब कर दिया गया है, उनको बिल्कुल ब्लैंक कर दिया गया है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या वजह थी, किसको खौफ था? देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोगों ऐसे भी हैं जिनके जहन में ये है कि हम इन्हें तोड़ें तो हमें सवाब मिलेगा, हमें मतलब एक हमारा फ़र्ज़ है इनको तोड़ना, और कुछ ऐसे जज्बाती या जुनूनी लोग होंगे। लेकिन सबसे पहले चीज़ तो ये देखा जाए कि यहाँ पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कोई इबादत नहीं होती, कोई प्रे नहीं होती। ये एक समझो एक तरह से हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की तरह खड़े हुए हैं। लेकिन जब कोई आता नहीं है, ना कोई गार्ड्स हैं, ना कोई रखवाली है, ना कोई पंडित हैं या जो भी होते हैं, कोई भी नहीं है। तो एक वीरान जगह थी तो कुछ लोगों को मौका मिल गया होगा, ठीक है ना, और उसको समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा किया। दूसरी चीज़ ये है कि इन चीज़ों को बर्बाद करने से, इन चीज़ों को तोड़ने से आपको पता है हम कितना दूर चले जाएंगे हिस्ट्री से। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो, इन जैसे लोग हैं प्रवीण मोहन जैसे और कई ऐसे हिस्टोरिकल क्या कहेंगे उन्हें, जो तारीख़ी चीज़ों के रिसर्चर करते हैं, वो लोग जो हैं इसका खोज निकाल के, कोई हो सकता है ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री में होती थी या उनका मकसद क्या था इस तरह की चित्रकारी करना, उसके अंदर बाकायदा उनको डिकोड किया जा सकता था। कोई चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जितना उसको डिस्ट्रॉय करेंगे उतना ही आने वाले लोगों के लिए, साइंटिस्ट के लिए
मतलब हमारा हिस्ट्री क्या थी, किस तरह से लोग थे, किस तरह से चीज़ें बनाते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो हमें ये पता चली थी कि जितनी भी चित्रकारी होती है, क्योंकि ये टेम्पल ही थे, स्कूल ये टेम्पल ही थे, दर्सगाहें, यहीं पर एजुकेशन दी जाती थी, पढ़ाया जाता था, विद्या दी जाती थी। लेकिन इसी तरह दीवारों पे इस चीज़ों को नक्शो निगारी की जाती थी, इससे पढ़ाया जाता था। इससे पहले की वीडियो में आपको याद होगा कि उन्होंने एक टेम्पल को बहुत ज़्यादा मतलब उससे रिसर्च की थी, तो बताया था कि उसको पूरा मेडिकल के हवाले से वो तो हैरानकुन था, बहुत। हमने हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 यानी कि हर चीज़ को डिटेल में समझाया गया था कि किस तरीके से क्या है, क्या मामला हैं उस दौर उस ज़माने में। यानी कि अब जाके मेडिकल ने, साइंस ने इतनी तरक्की करी है, लेकिन हमारे आबा उस्ताद ने हमें एक तरीके से बहुत पहले बता दिया था। यहाँ भी बड़ी ऐसी अजीबोगरीब सी चित्रकारियाँ हैं कि एक बंदा अपनी ही आंत को काट रहा है। अच्छा, उस ज़माने में भी कैंची जैसी चीज़ थी, इससे भी कोई मैसेज दिया जा रहा होगा। देखिए ये बाकायदा ऑपरेट कर रहे थे अपना खुद। अच्छा, कोई ना कोई चीज़ें होंगी। एक शख्स अपनी गर्दन से ब्लड गर्दन काट रहा है जो शख्स, तो उसके पाँव के नीचे एक इंसान है। देखिए वो रहम की भीख मांग रहा है, उसके बराबर में एक कॉइन पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है पूरी स्टोरीज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन जितना डिस्ट्रॉय होगा तो उतनी हम स्टोरियों की तह तक, उसकी जो डीप तक है वो नहीं जा पाएंगे। तो ये बहुत गलत बात है कि हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, हमारा इतिहास है, उसको मिटाने की जो नाकाम कोशिशें, क्योंकि ये तो उन पत्थरों पे बनी हुई है, तोड़ने की कोशिश ज़रूर की गई है लेकिन वो टूटती नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे पत्थर हैं, ऐसी रॉक हैं और ऐसे पत्थरों से, अच्छा अभी भी देखिए प्रॉपर सही तरीके से, मतलब साफ़ सुथरे तरीके से पड़ा हुआ है टेम्पल। आपको लौट गया, कहने वाले कहते हैं 20,000 साल पहले, कमाल हो गया, 15,000 साल पहले, 10,000 साल पहले। मतलब ये कोई, आपको क्या लगता है 2-3 साल पहले, 10-12 साल पहले की बात है? कैसे बनाते थे, किस तरीके से? अपनी तक मैं ये कहूँ डिस्ट्रॉय जो किया उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन अगर इनको टच नहीं किया जाता, इनको संभाला जाता, तो ये जूं के तू नहीं होते। और एक और चीज़ भी है कि जब मुगलिया दौर रहा है ना, उसमें भी बहुत सी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया। हमने इससे पहले वीडियो देखी थी जिसमें औरंगज़ेब ने बहुत की हरकतें की। हाँ, औरंगज़ेब ने की। और इसके अलावा कई टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने की एक वो था कुतुब मीनार पर भी जो अरबिक लिखी हुई है, वो कह रहे हैं कि वो अरबिक सिर्फ डिज़ाइनिंग के तौर पे अरबिक है, उसके कोई मायने नहीं है। जबकि सर सैयद ने ये बात कही, उसमें भी बाकायदा टेम्पल की जो घड़ियाँ होती है, टेम्पल की निशानी होती है, डिज़ाइनिंग होती है घड़ियाँ, और सॉरी घंटियाँ। तो घंटियाँ जो है उस पर कुतुब मीनार पे हैं, वो उसकी निशानी है टेम्पल की। टेम्पल्स में अभी भी ये चीज़ें चित्रकार, ये हो गया। एक ऐसी चार पिलर हैं, छत है, छत के ऊपर गुंबद बना हुआ है। बाकायदा दूर से देखने से गुंबद अलग लग रहा है, बाद में बना हुआ सीमेंट का, सही। लेकिन वो उसके जो पिलर हैं, यानी जब मुगलिया दौर रहा तो मुगलिया दौर ने अपनी बहुत सारी इस तरह की हरकतें की। क्यों? राज था इनका, और मतलब दूसरों को गुलाम समझते थे, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी, तो उन्होंने भी ये चीज़ें की है। लेकिन बहुत गलत है। अब ये डिस्ट्रॉय किस दौर में हुआ, किस दौर में नहीं हुआ, ये तो नहीं पता, लेकिन इसको भी इस तरह से कोशिश की गई, लेकिन बहुत रहस्यमय। और दूसरी बात ये, उन्होंने भी आखिर में सवाल छोड़ा कि ये सारी चीज़ें जो है, इस तरीके के टेम्पल्स हमें क्या मैसेज देते हैं, हमें क्या बताते हैं, क्यों किया गया? आज तक हम नहीं जान पाए आज तक। हम शायद बहुत ही नाकिस नॉलेज रखते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमें तो यही पता चला है वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उनने जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी थी अपनी बिल्डिंग्स बनाने में, अपनी साइट्स बनाने में, वो शायद आज भी ज़्यादा नहीं हो पाई है, और शायद हम वो आज भी नहीं ढूंढ पाए। लेकिन कम से कम ये जो मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, इनको तो हम समझ पाते हैं। इसको डिफेस, आप देखिए 50% टेम्पल को डिफेस कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर चुके। मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल जाहिलियत है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है, एक नाअक्ली कहें से। और इतना बड़ा मैसेज, इतनी बड़ी चीज़ें, इतना बड़ा इतिहास, पूरी दुनिया में इतनी हिस्टोरिकल चीज़ें कहीं भी नहीं होंगी जो हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी नहीं समझ में आती है, आपको अगर अपनी साइट्स बनानी थी, अपनी बिल्डिंग्स बनानी थी, तो और भी तो जगह थी ना हिंदुस्तान में। ये इन्हीं को तोड़ कर इन्हीं के ऊपर बनाने का क्या मकसद था? नहीं, बिल्डिंग बनाना और मतलब वही ना कि हिस्ट्री मिटाने का शौक़ था, और शायद उससे ये बड़ा कारनामा समझ रहे थे, या ये सेटिस्फाइड होते थे बिल्कुल ये काम करके। बिल्कुल यही बात है। एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और हैरानकुन वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।